Okay, one more thing that before moving it to one page, what difference you are seeing in these two diagrams, which I'm showing you, these two where the two bar magnets are placed vertically next to each other, with one facing like poles and the other facing unlike poles. Sir, that in one both the directions are same, as in both the south poles are face upwards, but in the other one they are faced, one is upwards, one is facing downwards. Sir, the difference is that they're not. The other one is not joining at the edges. अच्छा एजेस पे ज्वाइन हो रही है वो शायद मेरी ड्राइंग बनाते हैं बिकॉज ऑब्वियसली आई एम यूजिंग अ फ्री हैंड ड्राइंग तो इस वजह से अच्छा पॉइंट इज कि एक तो मैंने आपको खुद डिफरेंस बता दिया कि दैट द नॉर्थ ऑफ द वन आर फेसिंग द साउथ ऑफ द अदर एंड इन अदर south and south are facing and north are facing. Then we have obviously the directional differences, so obviously वो वैसे ही आ रहे हैं. But one very important that Muhyiddin, I think he has noted, आपके सामने मेरे ख्याल में तो मेरे चैट तो वैसे शेयर हो रहे हैं प्राइवेटली तो कुछ रहा नहीं है. आप देखते हैं कि यहाँ पे Muhyiddin Khan has noted a very important difference, and that is सर जो मिडिल वाली लाइंस हैं उसके दरमियान में टू लाइंस क्यों. अच्छा नहीं, उसने तो क्वेश्चन पूछ लिया, यही बेसिकली डिफरेंस था. ठीक है, अब देखिए मैं आपको डिफरेंस बताता हूं कि डिफरेंस यहां पर क्या है. इफ यू लुक एट दीज टू लाइंस जो मैंने यहां पे रखा हुआ, मैंने दिन यही आपका जो क्वेश्चन है ना, दैट इज बेसिकली द डिफरेंस कि हमारे पास जहां पर डायग्राम देखिए where we have opposite poles facing each other, तो हमारे पास जो मिडल में लाइंस है, यानी कि if I'll mark this region, lines over here and this region, lines in this region, if you note over here, वो हमारे पास कम है, whereas lines in this region, ये हमारे पास ज्यादा है. अब आप एक पॉइंट याद रखिएगा, and that's a very very important point, that magnetic field is the vector quantity. So when we are saying that magnetic field is a vector quantity, so there is a cancellation of magnetic field over here, being of the same strength, acting in opposite direction. In this case, the magnetic field, again, it's a vector quantity. Now, instead of acting in opposite direction, they are in the same direction. So vectors are going to add over here. So what I'm going to write in this place, I'm going to mention that magnetic field of same strength are in opposite directions. Therefore, will cancel each other. Okay? And in this case, magnetic fields are of same strength. And in same direction. सर ये फिर से समझा दें. जी बेटे दोबारा समझाएगा. Will reinforce each other.
Okay, bete. Remember that magnetic field is a vector quantity. If I'll say that there are two vectors of the same strength acting in the opposite direction, what will happen? They will cancel each other. वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. Now, just think, मैं पहले इस डायग्राम को आपको zoom करके I'll show you few things that you need to note. And this diagram, first of all, if you look at this point, this is 1 and 2 magnetic field. Now, if you look individually, अगर आप individually इस magnet को देखें, तो ये जो मैंने parts बनाए हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि ये field यहाँ से गायब है. इसका मतलब ये है just to save my time, I am just leaving these fields, इनको complete नहीं कर रहा. Otherwise, अगर आप बाहर वाले part को देखें, तो this field is coming over here. This field is coming over here. This field is connected to this part. अब अगर आप बाहर देखो तो बाहर कितनी लाइंस है? 1 2 3 4 5. बाहर हमारे पास कितनी लाइंस आ रही हैं? 1 2 3. मतलब बाहर तीन लाइंस है, 1 2 and 3. क्योंकि ये वाली लाइन जो है वो इसके साथ कंप्लीट हो रही है, ये वाली लाइन जो है ये इसके साथ कंप्लीट हो रही है. So whatever are the number of lines which are outside the magnet, the same should be the number of lines inside the magnet. आप देख रहे हो inside the magnet पे हमारे पास इस तरफ कितनी? सिर्फ एक. तो बाकी की दो किधर गई? वो किधर से कैंसिल आउट? वो किधर गायब हो गई? होनी तो जितनी इधर चाहिए थी सिमेट्रिकली उतनी ही उधर होनी चाहिए. In the similar manner, when I look at this diagram, I have 1 2 and 3. Over here, अगर आप देखें तो I had the same number of field lines the way I've shown you. We have these two fields and then we have these fields which are added. अब हमारे पास यहाँ पे field lines जो हैं वो add हो रही हैं. क्यों add हो रही है? Because they are in the same direction and they have the same strength. So the number of field lines that you can find in this region are more than the number of field lines you can find in this region. The reason is the two magnets' magnetic field are reinforced over here. A simple reason is that magnetic field is a vector quantity, so if of the same strength and in the same direction, they will add instead of they will cancel it. They cancel each other. In this case, they are in the opposite direction. So when there should be some sort of field over here as well. It'll be hogi or it'll be hogi, but those fields have cancelled each other, and you are just left with this field line. ये आपको देखने में जो ऐसा लग रहा है वो एक्चुअली में कैसे गया होगा? It should be somewhere like this. It must have originated from this part and it goes to this part. In the similar manner, this must have originated from this part and it must have gone to this part. But due to cancellation in this region, it appears to be that the field is like this. Field जो है आपके पास, it's like this instead of the way you were thinking before कि हमारे पास field जो थी वो कुछ इस तरह से नजर आ रही थी जैसे आप पहले सोच रहे थे. जी बेटे. Now let's see that do we have to draw whole lines or like it is? बेटे सर आप जूम आउट कर लेंगे? जी मैं करने लगा बेटे. सर वो मुझे स्क्रीनशॉट लेना है. बेटे मैं करने लगा. Yes, you can draw the way I've shown you. You don't need to draw the whole lines. It's just exactly. मैग्नेटिक सर हमने फील्ड्स की लाइन को भी याद करना होता है कि इस डायग्राम में इतनी लाइन है उसमें इतनी है. नहीं बेटे, ये आपने तीन लाइंस कम से कम हर डायग्राम में ना मैग्नेटिक फील्ड की तीन लाइंस बनानी है. Important point is that you are going to show the pattern that the way I have shown. Yes. That's an important point. सर क्योंकि ये जो सर पैरेलल है इसके अंदर एक के सेंटर के अंदर दो लाइन और एक में एक है. हाँ, ये याद रखना है कि अगर आपके पास पैरेलल में है, अगर लाइक पोल्स रखे हुए हैं तो सेंटर में ज्यादा लाइंस बनानी है, बाहर कम बनानी है. इफ अनलाइक पोल्स हैं, बाहर ज्यादा लाइंस बनानी है, सेंटर में कम बनानी है. ये पॉइंट्स है, याद रखना है. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दीस पॉइंट्स. ठीक है, इन पॉइंट्स को नहीं मिस करना. So here
Here you go. Yeah. Take care of it. Now coming towards the next point. Is it good? Have you understood that how you're going to draw these fields? सर जी बेटे. सर ये जो सर ये जो डायग्राम है इसके अंदर हम नॉर्थ से साउथ में जा रहे हैं तो साउथ से नॉर्थ में नहीं आना था. नहीं बेटे, नॉर्थ से साउथ जाना होता है. इनसाइड द मैग्नेट इट्स साउथ टू नॉर्थ. ठीक है. Outside it's north to south. यस. Okay. Now I'm going to show you the field lines on a current carrying conductor. Magnetic field patterns. Around current carrying conductor. Now, as I've told you in the very beginning, that magnetic field can be drawn around, or it can be determined, or it can be found around a magnet, moving charge, or a current carrying conductor. So I've shown you the magnetic field around the magnet. Now we need to show the magnetic field around current carrying conductor. Now this is one of the most important parts, because from here you're going to get to know about several other parts. Okay, Nete, sorry, I'll show you in the 3D animation that how these magnetic fields are formed. Don't worry. Okay? In the next class, I'll show you the animation of that. Okay, so coming back to this point, magnetic field patterns around current carrying conductor. So as we know that current carrying conductor can develop magnetic field around itself, the way magnets are developing magnetic field around themselves. So I'm going to show you those magnetic fields. First of all, we need to understand that how we are going to place current carrying conductors. So in the first place, how current carrying conductors are placed, let's find it out. Now just assume that this is a paper. I've drawn it in a way to just make it clear to you that this is the way I'm going to show you the paper. Then, before making a current carrying conductor over here, I'm just making the magnetic field around this current carrying conductor. That's how you're going to get the magnetic field in this conductor. It's going to be something like this. Around a current carrying conductor, we'll get circular magnetic field. Now you must be thinking, sir, both circular रहे हैं, बना oval रहे हैं, because paper भी मैं आपको उसी एक perspective में दिखा रहा हूँ. So actually में circular ही है, but आपको यहाँ पे देखने में ऐसे लग रहा है कि oval है, because you are looking from a side view. Just imagine that. Okay, so the way you are looking, so you're going to get the field lines the way I'm showing you. Just give me a second, Bete. Bete, you're most welcome. Instead of just asking question like this,
in a chat, why don't you just raise your hand and speak? I would prefer that more because it deviates me from looking at this point. फिर वो tempo break होता है. Please, instead of asking the question like this in a chat, पूछ लिया करें. Sir, are these magnetic field or magnetic field lines? These are magnetic field lines, the one which I'm showing you with the dots. Okay? Whereas this whole region is a magnetic field. And this square part is basically a paper. So it's a plane of paper. अगर मैं आपसे स्क्वायर पार्ट के ऊपर बात करता तो हमारे पास ये जो स्क्वायर पार्ट आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली हमारे पास है पेपर, ब्लैंक शीट ऑफ पेपर. अगर मैं इसको देखूं तो इट्स लाइक दिस. ठीक है, लेकिन आपको ब्लैंक शीट ऑफ पेपर जो है उसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड शो करने के लिए इस तरह से दिखा रहा. बेटे, इज इट विद द रेस्ट ऑफ यू एज वेल? बैकग्राउंड नॉइस बाकी बच्चों को भी आ रही है? सर बहुत कम है सर, बहुत थोड़ी सी है. बेटे वो एक्चुअली में आई हैव कनेक्टेड अ कंडेंसर माइक ओवर हियर. इट्स अ वेरी सेंसिटिव माइक. सो मैं इसलिए आपको मेरी आवाज क्लियरली ज्यादा आ रही होती है और जो पीछे कंडीशनर चल रहा है ना उसकी भी आवाज कैप्चर कर रहा है, क्योंकि इसका जो नॉइज कंट्रोल सिस्टम है ना वो मेरा जरा खराब हो गया, वो गिर गया इसके ऊपर से फिल्टर जो है इसका. So there is a problem because of that, but in the next class I'll try to. बहुत ज्यादा है या बहुत थोड़ी सी है? थोड़ी सी है, बिल्कुल थोड़ी सी है सर. थोड़ी सी है ना. I'll try to cover it up. Just okay. If now the noise is reduced or not around this conductor, and it's basically this field appears to you like this, the way I'm showing you. ये इस तरह से आपको नजर आएगा. अच्छा, अब इसमें कंडक्टर कैसे प्लेस करना है? Now let's place the conductor. So this is the conductor. Now you can see that I'm showing you the conductor the similar manner. See, this conductor over here, it will appear to you from this side. And then over here. ठीक है. ये हमारे पास कंडक्टर नजर आ रहा है. इसमें I'm making a few sections. This is for switch. So we have this variable resistor switch and for the power source. So these are the points. ठीक है, तो ये हमारे पास पावर सोर्स और स्विच और इन सब चीजों के लिए यहाँ पर ये प्लेस करता हूँ. अब यहाँ पर हमारे पास बन रहा है this part is basically resistor or variable resistor for
controlling magnitude of current. जब भी हम वेरिएबल किसी भी सर्किट में लगाते हैं, I've told you, जब आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक आप लोगों के साथ किया था, तो I've told you in that variable resistor, it actually controls the magnitude of current flowing through the circuit. So we are controlling the magnitude of current flowing through the circuit because we don't want that the current, a large amount of current flows through the circuit. It might cause problem to us. Then we have over here a switch. So this is the switch that I'm connecting. And then we have over here the power source, like a battery. So I'm connecting a battery, positive over here and a negative over there. So this is the battery. Now, in this case, the current should flow the way I'm showing you over here. This is a positive side, and this is a negative side. So that means that the current, conventional current's direction should be like this. Now, from here, conventional current is going into the plane of paper. So it's going like this. The term that this is a very important term that I have used, into the plane of paper. So conventional current is going into the plane of paper, and that's what I'll write over here. Conventional current and you always take conventional current is flowing through the plane of paper. ठीक है, तो हमारे पास जो कन्वेंशनल करंट है वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। अब अगर आप इसको दिखाते हैं, जो कन्वेंशनल करंट इज फ्लोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इट इज शोन दिस वे, जो मैं आपको बना के देने लगा हूं। दिस इज द सिंबल when you want to show that conventional current is flowing into the plane of paper. The symbol that you may show in this case is an encircled cross. तो आपने इसके अंदर एक encircled cross दिखाना है. This is the very symbol of conventional current flowing into the plane of paper, and you don't need to mention that you are talking about a conventional current, because whenever we talk about current, we are actually meaning we are indicating conventional current. Now, how you are going to determine the direction of the magnetic field around this current carrying conductor? One of our. ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है वन ऑफ अब और वन ऑफ? अच्छा बेटे, ना तो मैंने वन पापा बोला है ना बोना पापा बोला है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड पेपर पे रखें, जिस तरह से आई हैव शोन यू, ठीक है। अच्छा, सॉरी, तो जैसे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ that current carrying conductor is placed. If a current carrying conductor is passed through a hole in this magnetic field, so अगर हमारे पास होल में से यहाँ से current carrying conductor जाता है, just assume that this is the hole. मैं आपके लिए यहाँ पर ये वाला जो पार्ट बना रहा हूँ, आप assume कर लें कि ये एक होल है जिसमें से यहाँ पर हमारे पास ये करंट कैरिंग कंडक्टर पास करके जा रहा है, ठीक है। और अगर मैं आपको इस होल के ऊपर एक सिंबल बना दूं, then the symbol should be like this, कि हमारे पास इस होल के ऊपर क्रॉस लगे हुए दो, ठीक है। ये जो दो क्रॉस मैंने आपके सामने लगाए हैं, ये शो कर रहे हैं that current is carried, क्योंकि अगर कहीं पर भी ये क्रॉस एंड सर्कल क्रॉस मिल जाए ना, तो इसका मतलब है that current is carried into the plane of paper। यानी कि अगर आप plane of paper को देखें, तो this whole section is the plane of paper. Let me just show you this what I meant to say about the plane of paper.
this whole section is the plane of paper. And this conductor is going through the hole in the plane of paper and it's carrying current into the plane of paper. So you have to look at the way I've shown you. So हमारे पास ये conductor कुछ इस तरह से जा रहा है. In this case, we are going to get a cylindrical field. We are going to get a cylindrical field which is running along the length of this conductor. अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसी जगह पे नजर आए. But this is the place where I have kept iron fillings. So जब मैंने यहाँ पे iron fillings रखे हैं, that iron fillings will arrange themselves in this pattern that I'm showing you marking on the paper. Now, in reality, if I'll show you the magnetic field, this magnetic field is going to be this way, shown everywhere. यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पर ऐसे करके एक सिलेंडर बना दूं, तो ये जो सिलेंडर है itself is showing magnetic field. आपको ये जो सिलेंडर है ये पूरा throughout जो नजर आएगा, this will be along the length of the conductor. ये सारे लेंथ पे कंडक्टर के चल रहा होगा इस तरह से, और ये सारा सिलेंडर जो बना रहा हूँ ये इस पार्ट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसी तरह ही सर्कुलर. इसी तरह अगर मैं यहाँ पर ये सिलेंडर बना देता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी. इसी तरह अगर मैं यहाँ पे बना देता हूँ, so we are going to get magnetic field over here. ऐसी ही सिलेंड्रिकल. लेकिन मैं आपको सिर्फ सर्कल की फॉर्मेशन में शो कर रहा हूँ. The reason that why I'm showing you in the formation of a circle, because I'm just showing you the magnetic field on the paper. कि पेपर वाले रीजन पे अगर मैं आपको शो करूं तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, but in reality magnetic field is a cylindrical magnetic field which is running along the length of the conductor. But you are not going to show you this, you're not required to show this magnetic field the way I've shown you in form of a cylinder. You are just asked to draw the magnetic field pattern on the paper. That is along the whole length, the way the magnetic field should be cylindrical, but you are just going to show one plane out of that whole length, or the plane where you are getting at the point where you're getting the max paper. जहाँ पे पेपर होगा सिर्फ आपने उधर शो करनी है. And magnetic field around the current carrying conductor, it's a circular magnetic field where I haven't just shown you the direction. Now, to determine the direction of the magnetic field, you can use a current carrying conductor. You can use right hand grip rule. So I'm going to write over here right hand grip rule, which is used to determine direction of magnetic field. जी बेटे? Time हो गए? Just एक सेकंड दे दें मुझे. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस मैं ये बता दूं आपको. राइट हैंड grip rule. It is the rule used to determine magnetic field around the current carrying conductor. Used to determine direction of magnetic field. Direction of magnetic field around a current carrying conductor. Now, CCC stands for the current carrying conductor. चलिए ग्रिप रूल कहाँ पे है? बेटे ये मैं अभी आपको दिखाने लगा हूँ. ये आप वर्चुअली अप्लाई करेंगे, कोई डायग्राम में बना के दिखाने की जरूरत नहीं होती. अब इसमें क्या होता है? Curl your right hand fingers, point your thumb in the direction of the current in the current carrying conductor. Point your thumb in the direction of the current in the current carrying conductor, and your fingers will curl, your right hand fingers will curl in the direction of the magnetic field around the current carrying conductor. अब देखिए जब आप अपना thumb point करेंगे ना, thumb will point like this. This is a right hand thumb. ठीक है, ये आपके पास right hand thumb है, और जब आपका thumb इस तरह से point हो रहा होगा
इस तरफ जो मैं आपको ये दिखा रहा हूं, दिस इज द थंब, द वे यू आर पॉइंटिंग द थंब। उस वक्त आपकी, अगर आप अपने फिंगर्स को देखेंगे तो ये फिंगर्स जो हैं आपके पास कुछ इस तरह से कर्ल होके आएंगे, इस तरफ को जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर थंब विल पॉइंट एंड योर फिंगर्स विल कर्ल। अब जो फिंगर्स की कर्लिंग है, इट इज दिस वे। अगर आप इस पर फिंगर्स की कर्लिंग को देखेंगे, व्हेन यू विल पॉइंट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, the fingers will curl in the direction of the magnetic field around the current carrying conductor. So that means that the magnetic field around this conductor should be like this. आपको समझ में आया मैंने thumb किस तरह से बनाया? Point your thumb in the direction of the magnetic field. Yes. जी बेटे. And your fingers will curl up in the direction of the current carrying conductor around this. तो मैं यहाँ से ये जो thumb वाला part है ये खत्म कर रहा हूं, और उसके बाद यहां पे से मैग्नेटिक फील्ड की आपको डायरेक्शन शो करने लगा। सो द डायरेक्शन द मैग्नेटिक फील्ड इज क्लॉकवाइज इन दिस केस। हमारे पास ये डायरेक्शन बन रही है मैग्नेटिक एज पर द कर्लिंग ऑफ आवर फिंगर्स। सो आपको ये डायरेक्शन बनानी आनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम मैं इन सारी चीजों की आपको ना एक दफा एनिमेशन शो करूंगा एंड देन आई विल मूव अहेड। ठीक है? Okay, Vijay. That's it for today. See you on Thursday or Wednesday. Wednesday we have a class.